Okay. Last time we did direct form 1 and direct form 2. Sheroz, what's the difference between direct form 1 and direct form 2? किया था हमने, याद है? सर डायरेक्ट फॉर्म 1 तक हम लोगों ने पढ़ा था, और चलें ठीक है. का तो व्हाट जो इज है ना डायरेक्ट फॉर्म 1? ट्रांसफर फंक्शन. व्हाट इज डायरेक्ट फॉर्म 1? जी शेरोज, आई एम वेटिंग बेटा. सर सही से वो लास्ट लेक्चर रिवाइज नहीं किया, तो इसलिए सर नहीं है सही से आता. डायरेक्ट फॉर्म मेरे 1 का ताबा, नहीं पढ़ा, बट मेरे ताबा. बेटा, आर यू गेटिंग माय वॉइस? सर डायरेक्ट फॉर्म 1 में एक्सक्यूज मी सर. जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात. सर डायरेक्ट फॉर्म 1 में हम डिफरेंस इक्वेशन डायरेक्टली इवेलुएट कर सकते हैं. इनफैक्ट एवेल्युएट नहीं कर सकते. वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट, whether it's a transfer function or consequently the difference equation. डायरेक्ट फॉर्म 1 जो है, फ्लो ग्राफ हम बना सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द कोएफिशिएंट्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, और दीज टर्म्स जो आपके सामने अपीयर हो रही हैं, यहाँ से आप अपना फीडबैक कंपोनेंट और आपका फीड फॉरवर्ड कंपोनेंट जो है वो डायरेक्टली आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं बाय इंप्लीमेंटिंग the numerator of the transfer function before, which is associated with the zeros, and the numerator पहले करते हैं, और denominator which is associated with the poles वो आपका बाद में होता है. the feedback component जो है वो इसके बाद में होता है. and in that context, so this is the situation. so अगर मेरे पास hfz जो है that is equal to k is equal to 0 to m, and bk z minus k, and divided by 1 minus k is equal to 1 to n ak z minus k. So that's my numerator and that's my denominator. That's related to zeros of the system, and that's related to I'm not saying zeros of the system or poles of the system. I'm saying related to zeros of the system and related to poles of the system, because these are the coefficients of the polynomial, not the roots of the polynomial. ठीक है? So अगर ये situations है, तो I will be breaking up this system into two. The first portion is the numerator of the system, which is h1 of z, which is associated with the zeros, and the second system is the denominator, which is h2 of z, which is associated with the poles of the system. And as a result of that, you will be implementing your y of z over x of z. So you are essentially cascading both of the systems. One is associated with the numerator and the second one is associated with the denominator of the system. So this is my direct form 1 structure. Any confusions? अगर आपने किया हो, इसको कुछ करने की कोशिश की हो तो बताइए, अगर कोई confusion हो तो. जी, Shazur, Shanze, Mehrtaba, any confusions if you have done something about it? No sir. Okay, great. Now, what's the difference between direct form 1 and direct form 2? In fact, direct form 1 में आप न्यूमरेटर को पहले इंप्लीमेंट कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को बाद में इंप्लीमेंट कर रहे हैं. In direct form 2, what we are doing, we are implementing the denominator first, and जरा गौर से देखिए, h2 of z, which is associated with the denominator, and this is associated with numerator. ये काम हमने किया है.
अब जरा गौर से देखिएगा कि क्या एडवांटेज हम लेना चाह रहे हैं. सपोज दिस इज माय पॉइंट A, this is my point C, and this is my point B. So is it the same? Isn't it the same? ये node same है ना? Yes, sir. So it means we can collapse this node, and as a result of that, what will happen? That we would be reducing these number of delays, because अब इन दो delays को इस्तेमाल करने के बजाय I will be using just one delay element and I will getting the result. So that's the advantage we are getting in direct form 2 structures when compare it with direct form 1 structure. So that's the crux of direct form 2. The only difference is that you are initially you have implemented denominator first and numerator after that, and then you have collapsed the two systems, and in fact as a result of that you have reduced the number of delays. Convinced? Yes, sir. So that's my situation. इसी चीज को मैंने जब collapse किया है, तो as a result of that I'm getting this thing. So I'm implementing, it's not poles first, rather the polynomial which is associated with the poles, that is implemented first. That's the feedback portion, and that's the feed forward portion. In direct form 1 we were using the zeros first and the poles after that, as we were doing it here. This one, the zeros first, the feed forward component first, and the feedback portion after that. जी बच्चा. So as a result of that we are getting fewer delay elements. So ये memory elements जो आप use कर रहे थे, वहां पे अगर आपके पास n plus m delay elements थे, here you will be using minimum of n or m, sorry, maximum of n or m. Any questions? Sharoz beta, any question? No, sir. Okay. So that's one of the examples, that h of z is equal to 1 plus 2 z inverse over 1 minus 1.5 z inverse plus 0.9 z minus 2. And now I am interested in making df1 the direct form 1 structure and direct form 2 structures. For this, direct form 1 structure will be the numerator first and the denominator after that. So this is my numerator first, x of n. X of n is being passed through a delay element and being multiplied with 2 and being added with x of n. So x of n plus 2 x of n minus 1 at this location. And after that y of n के context में हम देखें तो y of n को पास किया एक delay element में से, we have got y of n minus 1 at this node, y of n minus 2 at this node. After passing it to y of n minus 1 through this delay element, we will be getting y of n minus 2, and then y of n minus 1 is being multiplied with 1.5. Now one thing is to note, यहाँ पे जो चीज नेगेटिव है वो आपको ट्रांसफर फंक्शन से डायरेक्ट अगर आप उठा लें तो इट वुड बी 1.5 प्लस कर दिया है, और यहाँ पे अगर प्लस है तो ये माइनस होके आ रहा है. इनफैक्ट अगर आप डिफरेंस इक्वेशन के साथ इसको करेंगे तो यू विल बी गेटिंग the same thing. With difference equation you will be getting, okay, I will be writing it in the difference equation form. So if I am interested in making the difference equation of that, that would be y of z over x of z, and that is equal to 1 plus 2 z inverse divided by 1 minus 1.5 z inverse plus 0.9 z minus 2,
and that is in fact equal to y of z 1 minus 1.5 z inverse plus 0.9 z minus 2, and that's equal to x of z 1 plus 2 z inverse. इसका inverse z transform अगर आप लेंगे तो you will be getting y of n minus 1.5 y of n minus 1 plus 0.9 y of n minus 2. Because of this z minus 2, it is y of n minus 2, and that's equal to x of n plus x 2x of n minus 1. और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर आप लिखेंगे तो दैट वुड बी y of n is equal to x of n plus 2x of n minus 1 plus 1.5 y of n minus 1 and minus 0.9 y of n minus 2. Now look at the coefficients and their signs. So if you are writing it in this form, it is plus and it is coming as plus here. It is minus and it is coming as minus here. But if you are directly taking it from the transfer function, you will be reversing the signs of the denominator. Any question, beta? No, sir. CR बैठे हुए हैं उसामा? निमरा इदरीस इसी क्लास में? बेटा शो सम कर्टसी, अगर जवाब तो दे दें। नहीं यस सर। सर, इसी क्लास। तो बेटा इसी में है या नहीं है? सर मेरे ख्याल से सर इसी क्लास में। निमरा बैठी हुई हैं? Okay. Now we are moving towards direct form 2 structures for this example. So what we are doing, मैं इसको दोबारा बना देता हूं. So in direct form 2, what we are doing, we are having delay element and we have two delay elements and 1 plus 2 z inverse, the zeros वाली side जो है आप पहले implement कर लें. So that's the situation here. There's 1 and this is 2. 1 plus 2 z inverse, and when we look at our zero poles or the denominator, so that's the situation. So it is 1, 1.5 and minus 0.9, and that's my direct form 2 structure. The question please. No sir. Okay, so let's look at the second example where it is saying that h of z is equal to 2z inverse plus z minus 2. That's the numerator, and 1 minus 0.75 z inverse plus 0.125 z minus 2, and that's my transfer function. And if I'm interested in making direct form 1, that's very simple. I will be implementing this numerator first. I have two delays, z minus 2 तक है, तो z minus 1 आपने दो delay elements लगाए हैं, 2z inverse and 1z minus 2. So that's for x of n is being passed through these delay elements and multiplied with these coefficients to get this numerator. And for denominator, we will be passing it through two delay elements because here again the polynomial of degree 2. So z minus 1 being multiplied with plus 0.75 because in the transfer function it is negative, and here it is
plus 0.125, so that's why we are multiplying it with minus 0.125, and we are getting this direct form 1 structure. And if we are interested in getting the difference equation, again what we did before, so you will be having this these terms in terms of z transform, and getting the inverse z transform, we will be getting y of n minus 0.5 y of n minus 1 and plus 0.125 y of n minus 2 because of this negative 2 here on z minus 2 here, and that would be equal to x of, rather it would be 2x of n minus 1 plus x of n minus 2, और स्टैंडर्ड फॉर्म में y of n की फॉर्म में अगर आप लिखेंगे that would be 2x of n minus 1 plus x of n minus 2 plus 0.75. Now this negative is going there and it is becoming as plus 0.75 y of n minus 1 and negative 0.125 y of n minus 2, and look at the signs now. Now the signs are similar to whatever these are, how these are, they are appearing in your difference equation, but they are opposite how they are appearing in your transfer function. Questions please. सर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि हमने डायरेक्ट फॉर्म 1 से करना है या डायरेक्ट फॉर्म 2 से, या कोई से भी हम लोग कर सकते हैं? नहीं, मेंशन होगा. यस सर. सर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, ये जो आपने साइन चेंज किए हुए हैं पोल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें. क्या चीज? यही तो चीज पिछले 2 स्लाइडों से यही तो चल रही है. आप क्या चीज पूछना चाह रहे हैं? प्लीज पूछ, जरा थोड़ा आप बताइए कि क्या मैं एक्सप्लेन करूं. सर ये साइन आप चेंज करते हैं पोल्स के जो कोफिशिएंट्स है, किसी का कर रहे हैं किसी का नहीं कर रहे हैं. बेटा किसी का नहीं कर रहा हूं, अगर ट्रांसफर फंक्शन से उठा रहा हूं. नाउ दिस इज माय ट्रांसफर फंक्शन. ट्रांसफर फंक्शन से अगर उठाया है तो मैंने चेंज किया है साइन. ये नेगेटिव साइन था तो पॉजिटिव लिखा, पॉजिटिव था तो नेगेटिव लिखा, ठीक है. लेकिन अगर डिफरेंस इक्वेशन तो में मैंने y of n की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जिस तरह से डिफरेंस इक्वेशन में अपीयर हो रहा है वही साइन मैंने कॉपी कर दिया है. सो देखिए y of n यहाँ पे 1.5 प्लस के साथ था तो 1.5 प्लस के साथ है. नेगेटिव 0.9 नेगेटिव साइन के साथ था तो नेगेटिव ही है यहाँ पे. प्रोवाइडेड यू हैव रिटन इट इन द डिफरेंस इक्वेशन और y of n की फॉर्म में लिखा हुआ है. हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन बेटा? जी सर ये तो समझ आ गया, लेकिन ये जो सर स्टार्ट में 1 लिखा हुआ है सर, 1 माइनस 1.5 था ना, तो 1 का साइन चेंज क्यों नहीं किया सर? उसकी भी रीजन यही है कि वो डिफरेंस इक्वेशन में भी प्लस 1 ही आ रहा था. जी बिल्कुल ऐसे ही. सही सर. चलें आगे. एंड दैट वाज द सेम थिंग हियर एज वेल. ठीक है. ठीक है बच्चा? जी सर. Okay. So now what is this? ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर है 2z inverse plus z minus 2. Okay, the same example, but now we are implementing it with second order. Sorry, df2 है, direct form 2 structure है. So again, what we are doing, we are implementing the zeros after this. In the start, we are implementing the poles 0.75 and minus 0.125, and 2 and 1 in the numerator are coming as it is because उसी तरह से मौजूद है. Any question बच्चा? In direct form 1 and direct form 2, कोई भी confusion हो तो please ask. शेरोज, शांजे? नो सर. आप शेरोज हैं जो नो सर कह रहे हैं? यस सर. ओके, मैंने कहा सीआर कहाँ है, उसामा भाई कहाँ है? जी सर. सो रहे हो उसामा? उसामा नहीं सर. जाग रहे हैं? जी सर जाग रहा हूँ. बस जवाब देने का रिवाज नहीं है, मसला क्या है? जवाब तो दे दिया करो बेटा. सर मैंने अभी ज्वाइन की है 2 मिनट पहले. अच्छा ठीक है भाई.
ओके जी, अच्छा ये इसमें एक गलती है और इसमें भी एक गलती है, कोई पहचान पाया? किसी को नजर आ रही है? मेरे भाई इसमें अगर आप देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से it's not like 1 plus 2 z inverse plus z minus 2, it's not like that. So इस बात का मतलब है कि स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज हमें चेंज करनी पड़ेगी? So this coefficients which was for x of n के लिए जो coefficients था, either I will be multiplying it with 0 or I will be breaking this contact. ठीक है? And similarly here as well, I will be breaking this contact or multiplying the coefficients with 0. So अगर ये 1 plus 2 z inverse होता तो in that case that was okay, but in now as there is no 1 plus 2 z inverse plus z minus 2, so that's why we have to break this. Any question, any confusion? नो सर। नो सर। यार इतनी वैसे डल क्लास जो है ना, सोए हुए हो तो वो तो 8:30 बजे उनको उठाया था यार, वो तो फिर भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स कर रहे थे। आप लोग तो बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है जैसे सोए हुए हो। नो थोड़ी सर। सर बहुत जाग रहे हैं सर। एनर्जी, थोड़ी बहुत तो बंदा शो करता है कि एक बंदा कर्टसी ही होती है कि बंदा जवाब दे देता है। आप लोग तो बिल्कुल ही जवाब भी नहीं देते, सुनते भी नहीं है। क्या करूं अब मैं, मेरे पास तो इसका कोई इलाज नहीं है। इट बिकम्स बोरिंग फॉर मी ना कि अगला बंदा सुन ही नहीं रहा, जवाब भी नहीं दे रहा, कोई क्वेश्चन भी नहीं कर रहा। तो फॉर मी इट्स नो यूज ऑफ सिटिंग हियर, और इस तरह से सिर्फ मैं अपने आप से बातें कर रहा हूं। नाम ले लेके मैं आप लोगों से बुलाता हूं। उस्मान 774 बैठे हुए हैं? सर जी कोई क्वेश्चन बेटा? सर समय लग रही है अभी, हैं जी? समय लग रही है सर अभी। क्या समझ लग रही है बताएं ना, क्या किया? डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 से क्या एडवांटेज है डायरेक्ट फॉर्म 2 में? सर डायरेक्ट फॉर्म 2 में से डिलेस कम हो जाते हैं। गुड, नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स जो हैं वो आप वो रिड्यूस्ड हैं, सो दैट्स द एडवांटेज यू आर गेटिंग इन डायरेक्ट फॉर्म 2। ओके ग्रेट। So now the question is that find the difference equation and draw the df1 and df2 structures of the following. So initially आप पहले find out करें difference equation. So you must be able to get the difference equation from transfer function. So अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किया है that h of z is in fact y of z over x of z, and that's equal to this transfer function, and y of z will be multiplied with the denominator and x of z will be multiplied with the numerator, and then you will be taking the inverse z transform of that. So y of z will become as y of n minus 0.75 z inverse y of z will become as 0.75 y of n minus 1, and this term will become as 0.125 y of n minus 2 because of this z minus 2. And similarly on this side, x of n plus 2x of n minus 1 plus x of n minus 2, and this is the standard format that y of n will be equal to x of n plus 2 of x minus 1 plus x of n minus 2 plus 0.75 y of n minus 1 plus minus 0.125 y of n minus 2. Now this is your difference equation, and you can directly write the direct form 1 or direct form 2 from here as well. So just write y अपना direct form 1 अगर हम लिखने की कोशिश करें तो that would be the zeros portion first. So x of n, this x of n plus 2 of x minus 1, this is adder.
Remember, this is an adder. यहाँ पे सारी terms add हो रही हैं. So x of n plus 2 of x n minus 1, and this is adder as well. So it is 2 of x n minus 2 and being added to this term as well. So 2 of x n minus 1 plus x of n minus 2. So this portion is obtained at this location. And then you have to implement the feedback component, which is 0.5 y of n minus 1. At this location, at this node, you have y of n minus 1. So that is being multiplied with 0.75. So 0.75 y of n minus 1 minus 0.125 y of n minus 2, and everything is being added to the previous terms, and we are getting this y of n. So that's my direct form 1 structure from this difference equation. And similarly, I can get the difference direct form 2 structure from here. The poles first, or the denominator first. So it is 1. You can take it from here as well. 1 plus 0.75, because it is plus 0.75 here, and minus 0.125 y of n minus 2, it is here. And similarly for feed forward portion, this is 1, 2 and 1, 1, 2 and 1. So that's my direct form 2 structure. If now you should be able to convert your transfer function into difference equation, or difference equation into transfer function. And from your difference equation, you should be able to draw the direct form 1 and direct form 2 structures, and from transfer function, you should be able to draw your direct form 1 and direct form 2 structure. The only difference between direct form 1 and direct form 2 is that you are implementing poles, the denominator first and numerator after that, whereas it is in the reverse order in direct form 1. And the only advantage we are getting in direct form 2 is that we are using lesser number of delay elements. Questions, please. No sir, समझ आ गई sir. No, sir. Okay. So let's do this, how we can get convince ourselves that our system is what we are doing is correct, that y of n here, so we are getting y of n is equal to, we have introduced this node w of n here, so y of n is equal to w of n, this line is w of n, and then it is this w of n is going down, and it is being multiplied with 2 and then being added. So it is plus 2 w of n minus 1, and then this w of n minus 1 is going down, and it is giving us w of n minus 2 and being added to this. So that's my feed forward portion. Y of n is equal to w of n plus 2 w of n minus 1 plus 2 plus w of n minus 2, and take the z transform of that. Y of z will be equal to w of z 2 w of z z minus 1 and w of z z minus 2, and I will be getting the transfer function of this portion only, the feed forward portion only, as y of z, as y of z is the output and w of z is the input. W of z, that would be equal to the numerator 1 plus 2 z inverse plus z minus 2. Similarly, I can take w of n as the output and x of n is the input. So w of n will be equal to x of n plus w of n minus 1 being multiplied with 0.75 plus w of n minus 2 being added, multiplied with minus 0.25 and being added. So that's the equation. W of n is equal to x of n plus 0.75 w of n minus 1 minus 0.125 w of n minus 2, and when we get the z transform of that, we will be getting w of z and then 1 minus 0.75 z minus 1 plus 0.125 z minus 2, and that would be equal to x of z. So w वाली terms अलग कर ली हैं, x वाली terms अलग कर ली हैं, and w of z over x of z will be equal to 1 over 1 minus 0.75 z inverse plus 0.125 z minus 2. And if I'm interested in knowing the z transform of the whole system, that would be y of z over x of z, because actually y of n is the output and x of n is the input.
that W of n was the temporarily introduced just to verify already got, and we have got these structures. So now we are convinced that our direct form 2 is working fine from our difference equation which we have obtained from this structure. Questions, beta? क्या कर रहे हैं हम जी आपके इसमें? इसकी जरूरत नहीं है, चलेंगे अपनी जगह मौजूद रहे. ओके. The important ones are cascade structures and parallel structures, and we are looking forward looking towards the motivation that why we are interested in using this cascade and parallel structure, and for that we would be visiting fundamental theorem of algebra. And what does it talk about? What does the fundamental theorem of algebra talks about, and what's the main topic of it? Well, it talks about roots of the polynomial. अभी तक हम जो चीज इंप्लीमेंट कर रहे थे वो हम डायरेक्टली पोलिनोमियल उठाते थे और पोलिनोमियल को अपने स्ट्रक्चर में इंप्लीमेंट कर देते थे. बट नाउ वी आर सेइंग दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पोलिनोमियल और पोलिनोमियल, एंड ऑफ कोर्स वी नो दैट ये जो न्यूमरेटर है वी हैव बीन सेइंग that this is associated with the zeros of my system, because इसके जो roots होंगे इस polynomial के वो मेरे zeros के साथ associated होंगे और zeros होंगे वो मेरे, और जो roots of this denominator होंगे वो मेरे position of the poles होंगे. ठीक है, यानी मैं डायरेक्ट जीरोस लोकेशन और पोल लोकेशन को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूं डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 में, बल्कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं पोलिनोमियल्स को इंप्लीमेंट कर रहा हूं जो कि इनडायरेक्टली मेरे जीरोस और पोल्स के साथ रिलेटेड है. अच्छा, अब आते हैं इस बात पे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहता है. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये कहता है कि एनी पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, like suppose this is a polynomial in variable z or z inverse, so that can be factored into simple first order terms, that is polynomial of degree n can have n real roots or complex roots. Suppose मेरे पास p of z है, so p of z is suppose alpha z cube plus beta z square plus gamma z plus delta. So alpha beta gamma delta जो है ये मेरे coefficients हैं, like 1 2 1 1 minus 0.75.125. these are the coefficients of my polynomials. This is a third order polynomial, z cube की बात हो रही है. So in that case fundamental theorem of algebra कहता है कि मेरे पास इस केस में कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे, because it's a third degree polynomial. So I will be having 3 roots. Either all the 3 roots will be real, या फिर ऐसा होगा कि इनमें से एक तो रियल होगा और दूसरे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, बिकॉज आई एम एज्यूमिंग कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो हैं अगर तो ये रियल हैं, तो इन दैट केस ये रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी कि इनमें से या तो तीनों रियल हैं रूट्स, या फिर एक रियल है और दो जो रूट्स हैं मेरे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स हैं. ठीक है, अब इशू क्या है मेरा, मैं डायरेक्ट फॉर्म 1 में और डायरेक्ट फॉर्म 2 में आई एम डायरेक्टली इंप्लीमेंटिंग दिस अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा. ठीक है, और this is an ill conditioned problem. Ill conditioned problem क्या होता है? Ill conditioned problem ये है कि if there are small perturbations in the coefficients, in these coefficients alpha beta gamma and delta जो कि मैं direct form 1 में implement कर रहा हूँ, if there are small perturbations in these coefficients, there will be problems of higher degree
जो ये जो रूट्स हैं मेरे, इनमें ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ पे नजर आएंगे। और अगर ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स बढ़ता चला जाए तो फिर ये प्रॉब्लम जो है ये मजीद स्वेयर होता चला जाएगा। ऑफ कोर्स व्हेन वी आर गिवन सम रिक्वायरमेंट्स, तो हम उनकी पोल्स एंड जीरोस की लोकेशन के हिसाब से ही फिल्टर बनाते हैं और हम अपना कोएफिशिएंट्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं। नाउ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर तो मैं अपना कोएफिशिएंट्स डायरेक्ट फ्रॉम 1 और डायरेक्ट फ्रॉम 2 के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहा हूं, वेयर आई एम डायरेक्टली इंप्लीमेंटिंग दीज I don't have infinite precision in my digital system to represent all these alpha, beta, gamma and delta. So there will be finite precision. I will be implementing my system using 16-bit registers. I will be implementing it, suppose 64-bit registers, but not more than that. Probably it is 128-bit registers. I'm being very much lavish, और मैं 128-bit registers use कर रहा हूँ to represent my systems. Yes, everything will be fine, but at a time after multiplication, a time will come when those 164 or 128 bits will not be enough to accommodate my multiplications. As a result of that, my quantization error will be introduced, and as a result of that, these perturbations will be introduced. जी प्लीज, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस सिलसिले में तो प्लीज पूछिए, जो कि होना चाहिए। सर अगर हम लोगों ने यानी अगर इश्यूज अगर हम लोगों के पास ये आ रहा था तो फिर हमने डायरेक्ट फॉर्म 1 और 2 क्यों पढ़ा है? डायरेक्ट यही पढ़ लेते, क्योंकि उसमें तो हम लोगों के पास एग्जैक्ट जीरोस और पोल्स तो हम लोगों को नहीं पता चल रहा था, हम उससे रिलेटेड वो फाइंड कर रहे थे। आपको आगे चल के इस बात का जवाब आ जाएगा, क्योंकि आपको कैस्केड और पैरेलल में भी अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे तो इन दैट केस आपको सेकंड ऑर्डर सेक्शंस के लिए जाना पड़ेगा, और सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट फॉर्म 2 के लिए आप जाएंगे। सो डायरेक्ट फॉर्म 2 इंप्लीमेंट तो आपने करना ही है ना, डायरेक्ट फॉर्म 2 या डायरेक्ट फॉर्म 1, इधर फर्स्ट ऑर्डर सेक्शन सबमिट इंप्लीमेंट करना हो या सेकंड ऑर्डर करना हो, तो आपको डायरेक्ट फॉर्म 1 इज इनफैक्ट यूं समझें कि बेस लाइन थी, वो तो इंट्रोडक्शन थी, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना था। डायरेक्ट फॉर्म 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हियर यू हैव गॉट समथिंग, यू हैव रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ डिलेज। तो फर्स्ट ऑर्डर सबसेक्शन भी इंप्लीमेंट करने के लिए, एक जीरो और एक पोल इंप्लीमेंट करने के लिए, you will be implementing the direct form 2 first order subsection. So direct form 2 important चीज है। Have I answered your question, beta? Yes, sir. Okay. Any other question? Sir. अच्छा, No, sir. जी जी बोले बोले। मैंने कहा नो सर, और तो नहीं है सर क्वेश्चन। जी शानजे आप बताइए, व्हाट्स द मोटिवेशन फॉर डायरेक्ट फॉर्म फॉर कैस्केड एंड पैरेलल स्ट्रक्चर्स? सीआर देखिए शानजे बैठी हुई हैं। पहले तो सीआर को देखना पड़ेगा कि वो बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए। बैठी हुई है। जी शानजे बेटा जवाब दीजिए। शेरोज? यस सर। जी जवाब दीजिए।
सर हम लोग जो है इसमें अब यही पता चला है कि अगर हम लोग के पास जो रूट्स होते हैं, ठीक है, उनसे हम लोग के पास इश्यू ये आ रहा होता है कि अगर हमारे पास कोई, हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि डायरेक्ट फॉर्म 1 और 2 में कि रूट्स के बारे में, कि वो हमारे पास रेशनल है या कंजुगेट पेयर्स में, तो हम लोग इस मेथड के ज़रिए हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास रूट्स जो है हमारे, उनको हम लोग ट्रांसफर फंक्शन से पहले तो ये था कि कोफिशिएंट से डील कर लेते थे डायरेक्ट फॉर्म 1 और 2 में, तो अब ये है कि हम लोग इसमें रूट्स को देख रहे हैं। पार्शियली करेक्ट। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये आपके सामने एक ट्रांसफर फंक्शन मौजूद है, एच एफ जी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 जी इनवर्स प्लस जी माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75 जी माइनस 1 प्लस 0.125 जी माइनस 2। डायरेक्ट फॉर्म 1 बनाना हो या डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर बनाना हो, you will be directly taking these coefficients which are 1, 2 and 1 in the numerator and 1 minus 0.75 and plus 0.125 in the denominator, and you will be implementing your system or your structure direct form 1 and direct form 2. And the difference between direct form 1 and direct form 2 is that you are in the direct form 1 you are implementing numerator first and denominator after that, whereas in direct form 2 you are implementing your denominator first and numerator last, and as a result of that you are getting advantage of using lesser number of delay elements. Now moving towards the cascade and parallel structures, the motivation is that these 1, 2, 1 और नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है 1 माइनस 0.75 और प्लस 0.125, ऑफ कोर्स ये कुछ लोकेशंस के साथ एसोसिएटेड हैं। अगर न्यूमरेटर है तो इसके रूट्स जो हैं वो 0 लोकेशंस हैं, और जो डिनोमिनेटर है तो इसके रूट्स जो हैं वो पोल्स की लोकेशंस हैं। सो कहने का जो मसला है वो ये है कि अगर आप डायरेक्ट इसको इंप्लीमेंट करते हैं बिकॉज ऑफ द फाइनाइट प्रिसियन इफेक्ट्स, अगर 1, 2 और 1 या 1 माइनस 0.75 या 0.125 अगर हम इनफाइनाइट प्रिसियन में इनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो there will be perturbation in representing these numbers in digital systems. So as a result of that आपके रूट्स के ऊपर इसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा स्वीयर होगा, और ये सिवियरिटी बढ़ती चली जाएगी if the degree of the polynomial is higher. So that's the motivation कि हम कैस्केड और पैरेलल स्ट्रक्चर्स में हम लेसर नंबर ऑफ जो हम रूट्स हैं हम उन रूट्स को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। अगर तो रियल रूट्स हैं तो फबेहा, इससे बेहतर तो और चीज हो ही नहीं सकती। सो वी विल बी इंप्लीमेंटिंग फर्स्ट ऑर्डर सबसेक्शंस इफ वी हैव रियल रूट्स, यानी हर रूट के लिए सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्ट फॉर्म 2 फर्स्ट ऑर्डर सबसेक्शन होगा, एक पोल के लिए और एक जीरो के लिए। लेकिन अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स हैं तो फिर हमें मिनिमम जो है वो सेकंड ऑर्डर सबसेक्शन के लिए जाना पड़ेगा in order to have real coefficients in my difference equation. So that's the motivation कि उधर मैं zeros और poles को implement करना चाहता हूं as compared to the coefficients जो कि मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। I hope कि understanding में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। बिल्कुल सर। ठीक है, so I am leaving it here because कल फिर हम जो है ना इस चैप्टर को इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे। We will be doing cascades and parallel structures and the structures for our linear phase filters. Yes sir. Yes, sir.